नमस्कार। मोहम्मद रफ़ी साहब का एक शेर है कि गम भी तन्हा है और खुशी तन्हा, इस कदर क्यों है ज़िंदगी तन्हा। ये जो शेर है, ये आज के जो कार्यक्रम है, जिस पे आज हम जिस विषय के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, उसको अपने आप में बयाँ कर देता है कि आज हम किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ बात ये हुई है कि ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अलग सी तन्हाई, एक खालीपन-सा जीवन में है। एक निराशा-सी हमें घेरे हुए है। ऐसा क्यों है? अगर हम बात करें, अगर अपने आप को ग्लोबलाइज़ करने की, तो हम बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज़ हो चुके हैं, तकनीक के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुके हैं। जो दूरियाँ पहले कहूँ कि दिनों में तय होती, अब वो मिनटों में तय हो जाती हैं। तो इतना सब बदलाव होने के बावजूद भी कहाँ ऐसी कौन-सी दूरियाँ बन गई कि हम अपने आप से ही परेशान हैं, अकेलेपन के अंदर जूझ रहे हैं। क्यों हमारा दिमाग कहीं, हमारा शरीर कहीं संतुलन में नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि बीमारियाँ भी एक के बाद एक हमें जकड़ने की कोशिश करती हैं, जबकि मेडिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उन्नत हो गई है। वो जो बीमारियाँ जिनके ज़रिए पहले लोग मर जाया करते थे, अब उनके वैक्सीनेशंस आ गए हैं और आप ये देखिए कोरोना जैसी जो डिज़ीज़ रही उसको भी क्योर करने के लिए वैक्सीन्स का सहारा लिया गया और अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो इतनी तकनीक की बात करें, साइंस की बात करें, हर चीज़ में, हर विषय में इतनी उन्नति हुई तो फिर ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये बेबसी-सी और ये निराशा-सी क्यों जीवन में है? एक गहरा सवाल। आज इसी गहरे से सवाल को जानने की कोशिश हम शो के ज़रिए करेंगे और इसके लिए हमने एक ऐसी अतिथि को आमंत्रित किया है जो इस विषय जो माइंड, बॉडी और सोल की जो हम बात करें, वेलनेस की जो बात करते हैं, उसके ऊपर अद्भुत कार्य कर रही हैं। तो चलिए, मैं आपको रूबरू करवाता हूँ उस शख्सियत से जो हमें बताएँगे कि किस तरह से ये जो समस्याएँ आ रही हैं, उनका रूट कॉज़ क्या है, ऐसे समस्याएँ शुरू कहाँ से होती हैं और हमें किस तरह से अपने आप को आगे लेकर जाना चाहिए। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनौलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेहद महत्वपूर्ण की वजह आप जान चुके हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड की, बॉडी की और सोल की कि किस तरह से हम इसके अंदर संतुलन बैठाएं और अपने आप को उन्नत बनाएं और समाज की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। तो चलिए उस अतिथि से आपको रूबरू करवाता हूँ जो आज हमारा मार्गदर्शन करने वाली हैं और उनकी विद्वता का आज हम लोग लाभ लेने वाले हैं। नमस्कार गीता जयकुमार जी कि आज आपने अपने अति व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में हैं। हम बहुत-बहुत आभारी हैं आपके। Thank you for having me. I think this program has been on the anvil for over a year and it's happened only now. So thank you very much for giving me this opportunity. जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका भी। दर्शकों, मैं एक अपनी ज़िम्मेदारी के नाते बताना चाहूँगा गीता जयकुमार जी जो आज हमारे साथ अतिथि जुड़ी हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो आज के स्पीकर हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। गीता जयकुमार जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी हुई हैं और एक माइंड बॉडी वेलनेस थेरेपिस्ट हैं, एक लाइफ कोच हैं, साथ ही साथ में हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं। ये एक ईएफटी मास्टर ट्रेनर भी हैं, एक लाइफस्टाइल लाइफ प्रिस्क्रिप्शन मास्टर ट्रेनर भी हैं, BWRT एडवांस प्रैक्टिशनर भी हैं, मेटा हेल्थ मास्टर ट्रेनर भी हैं, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट भी हैं, साथ ही साथ में ECE मास्टर ट्रेनर भी हैं और फैमिली एंड द कार्मिक कंसल्टेशन प्रैक्टिशनर भी हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग प्रैक्टिशनर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे इस क्षेत्र के अंदर काम किया। हम मान सकते हैं कि ऐसे वो जीवन की सभी विधाएं या सभी वो मॉडलिटी जिनके जरिए आप जीवन के अंदर समृद्धि ला सकते हैं, उनके अंदर इनका अद्भुत काम है। ये एक जो ब्लिस योगा जो कॉन्सेप्ट है उनकी पायनियर भी रही हैं और इन्होंने उसके जरिए एंशिएंट आर्ट ऑफ योगा है, उस कॉम्बिनेशन के जरिए मेटाफिजिक्स और इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए एक इस तरह का एक्सपीरियंस जो तैयार किया जिसके जरिए कि माइंड और बॉडी को वेलबींग की तरफ लेकर जा सके। तो इनकी कोशिश यही है कि दिमाग और दिल और आत्मा जब तीनों एक साथ आते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तब जाके अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स निकल कर आ पाते हैं। गीता जी प्रैक्टिस करती हैं डिफरेंट डिसिप्लिन, चाहे मैं जिसकी बात कर रहा था जो थीटा हीलिंग NLP की बात करें, पिक्चर टैपिंग की बात करें, मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग की बात करें, मैट्रिक्स बर्थ रीइम्प्रिंटिंग की बात करें, रूट हीलिंग की बात करें, PEAT की बात करें, एस मास्टर की बात करें, एक्सेस बार्स की बात करें, रेकी, मतलब ढेरों सारी मॉडलिटीज है जिनके अंदर ये सिद्ध हस्त है और हमारा सौभाग्य है कि इतनी विभिन्न विधाओं में करीब मुझे लगता है कि ये
50 से भी ज़्यादा जो विधाएँ हैं जिनके अंदर ये पारंगत हैं, और आज इनके ज़रिए, इनके एफ़र्ट्स के ज़रिए ढेरों लोग अपनी समस्याओं का निदान पा चुके हैं। ये अपने जो सेशंस हैं वो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से लेते हैं और लोगों से जुड़ती हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। ये जो फेलो हैं द रॉयल सोसाइटी ऑफ द आर्ट्स लंदन, और जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड है, और एनी प्रिंसेस जो रॉयल उनकी वहाँ से जुड़ी हुई हैं और अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं और लोगों की ज़िंदगी के अंदर सुख कहें, शांति कहें, वो लेकर आने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि सवालों का सिलसिला हम शुरू करें तो उससे पहला जो सवाल जो मुझे लगता है कि गीता जी से लेना चाहिए वो यही लेता है कि आता है कि गीता जी किस तरह से आप जो माइंड बॉडी वेलनेस की जो फील्ड है, इसके अंदर आप दाखिल कैसे हुए? आपके पास एक अच्छी लाइफ़स्टाइल थी, सारी चीज़ें थी, आपने उन तमाम चीज़ों को छोड़ते हुए इस तरफ चुना कैसे? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर मैं अपने आगे के सवाल लेने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। So it all started for me when I was in my teens, around 16 or 17 years when I went into yoga. And I really enjoyed it because my passion was fitness. I went into yoga, aerobics, and I really enjoyed it. But when I was into yoga and I was going into the advanced poses and started on headstand, then I started feeling very dank and depressed. I wouldn't use the word depressed because I didn't know the meaning at that point of time. So I was feeling very dank and gloomy. And this went on for a few days. And when I brought this up with my teacher, due respects to her, because we have advanced so much, we have the internet and not, I mean, research has improved so much in these times, but then that was the only information they had. So she told me it was probably because of the dust on the floor, and I accepted that and continued. But this feeling kept going deeper and deeper when I had to bring my mother into the picture. And she, being a mom, told me to stop doing yoga, and that was the end of it. So many years passed by. I got married, had children, and went into Reiki, and I became a grandmaster. And I mean, there was some quest, something which was unsatisfied in me. So I just kept jumping into different modalities. And before long, I had about 20 to 30 modalities in my kitty. But there was still a quest when I went back into yoga, a different form of yoga. And again, when I went into the headstand, again, there was the same feeling, but with it came a huge insight where I was a victim of abuse as a child. And this again was a huge shock to me. And I went back to, I was into different modalities. So my mentors helped me get over this aspect. And I gave up yoga again. But I kept, my quest was still on. And there came a time when there was a death in the neighborhood of a very young child. And I went to the funeral of this child and came back home and was deeply depressed. And I did not know the reason. And when I sat pondering, I did what a normal human being would do: one plus one equal to two. I went to that funeral, saw that young child's body, and I felt depressed. So I went into all the modalities I knew, went to all my mentors, swap partners, but I did not have a resolution. And I went to my spiritual guru at that point of time, who I think this was a real turning point in my life where he ridiculed me before everybody. A crowd of about 20, 30 people. There was no reason to ridicule me. I had an issue and I was seeking help. And I was ridiculed, and at that point of time, something shifted in me. This is my body, and I'm searching for an answer from somebody else who doesn't know me at all. So I took a stand that day that I would look into my own, the problems I'm going through. I am my only resource. So I came out, came back home, and the problem still continued. So I went into the net and searched and came upon this root cause analysis. And believe me, there was no turning back for me, because I found the answer to the depression where it was not the boy's death, but I was speaking to somebody in the crowd who resembled my perpetrator when I was a child. And that was a trigger for me. It put me back into that depression. And just the knowledge, I hadn't even healed it, but just that knowledge was so empowering and brought that shift into me. And from then on, it has been a quest to plunge further into this field. And that's where I am today.
बहुत बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि एक बचपन से सुनते ही आवश्यकता आविष्कार की जननी है। साथ ही साथ में ये भी सुनते आए हैं कि "जा के फटे न पैर बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई।" तो ऐसी बहुत सारी जो कहावतें हैं, वो आपकी बातें सुन के मुझे सार्थक होती नज़र आ रही हैं, कि जैसे ज़रूरत पड़ती गई उसी के लिहाज से आपने अपने आप को शेप देती गई, आकार देती गई और आधार मिलता गया और आप अपना निर्माण करती चली गई। यहाँ पर एक जो बात मुझे लगता है कि शायद इन सब गहराइयों को समझ पाने की क्षमता इसलिए भी आपके अंदर आई क्योंकि आपने उस दर्द को खुद सहा और उन परेशानियों को सहते हुए उनसे आगे निकलने की कोशिश की। और एक जो मुझे लगता है कि आपने जो बात करी सब दर्शकों को भी इस बात को गौर रखना चाहिए कि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने अंदर क्या है, किस तकलीफ में हैं, क्या नहीं, उसको जानने के लिए बाहर झाँकते फिरते हैं। तो एक बाहर वाला आदमी आके अगर हमें इतने अच्छे ढंग से जान सकता है, हमारे पर विचार करके, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को उस एकांत में लेकर जाएँ, समझें अपने आप को, हम अपने आप को समय दें, तो शायद वो समस्याएँ ही हमारी ज़िंदगी में शामिल ना हो, जैसे कि गीता जयकुमार जी ने कहा। इनके अंदर भी एक बात हुई कि कोई दूसरा एक आदमी आता है, कोई शख्स आता है और वो मेरी समस्याओं को जानता है और उन्हें निदान करता है, तो क्या मैं अपनी समस्याओं का निदान खुद नहीं कर सकती? तो ये जो बात है खुद को जानने की इच्छा कि मैं कौन हूँ, मेरी समस्याएँ क्या हैं, अगर आप बढ़ते हैं तो आप देखिए कि आपको समस्याओं के समाधान भी मिलने लग जाते हैं। क्योंकि शायद यही बर्निंग डिज़ायर है जो आपको उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ लेकर जाती है। गीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो हम बात करते हैं माइंड और बॉडी वेलनेस की, तो हम इस और आगे चर्चा को बढ़ाएँ तो उससे पहले तो यही सवाल आता है कि इससे हम किस तरह से कहें क्या है ये आखिर माइंड बॉडी वेलनेस? It just means that mind, body, wellness. Now you are sitting here and talking to me and just think you have a headache. Now, will you be able to give me your 100%? No, right? Because your mind will keep going back to that pain. So you have a body issue and your mind is getting upset with it. Similarly, just think if you have had a misunderstanding with your sibling or somebody at work, then what happens? It has been very, very intense and you have not resolved this. Then you're constantly thinking about it, obsessive thoughts, and maybe if it was so intense, your BP also could be raised. So you had something happening where your body, your mind is affected and your body is affected. And along with this mind body wellness, I would like to bring in spirit as well as your social connect. Now, spirit actually means being in harmony with self and your environment. There has to be an alignment. And for this, you have to constantly work on your thoughts, your beliefs, your values. Like if you take your value system and if you place importance only on, say, your family, then your health, your work, your money, all of that will create an imbalance. And that will affect you again on a mental, physical, emotional, spiritual level. So it's very important to balance mind, body, spirit. And now I come with the social connect. That is your connection to the outer world. It's very, very important to have that connection. We are social beings. So we have to have that connect. Just imagine, like if you take the COVID times where we were all in isolation, we had our family with us and we were happy that we had these people around us. But just think, as the days progressed, then there was something happening in us. We wanted to connect to somebody else as well. This was not enough for us. So that connection is very, very important. Sometimes you even get depressed when you are, just imagine being in isolation for months and maybe a year. You're definitely going to suffer physically, mentally, and emotionally. So, mind, body, wellness, social, spiritual connect is very, very important for all round wellness. बहुत बड़ी बात, सही बात कही कि हम जिस चीज़ से निर्माण किया है, हमारा जिससे हम बने हैं, अगर हम उसी चीज़ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं खुद को, उससे अलग अपने आप को कर लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो ऊर्जा का जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएँगे, तो फिर हम अपने आप को रिफ़िल कैसे करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि डे टू डे वर्क हम करते हैं, रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसके अंदर कहीं न कहीं हमारी निजी एनर्जी है, उसका भी नुकसान तो होता ही है। और एक जो बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है कि जब तक हम चीज़ों को एक साथ नहीं लेके संतुलन में नहीं लेकर आते, तब तक हार्मनी नहीं बनती। चाहे हम घर के 2 लोगों की बात करते हैं, 2 लोगों में अगर बैलेंस नहीं है, तो हार्मनी नहीं बन सकती। तो ठीक उसी तरह से ये भी बात आती है, जैसे गीता जी ने हमें समझाया कि जो माइंड हो, बॉडी हो और सोल हो, उन तीनों में भी जब तक बैलेंस नहीं आता, तब तक आप एक हार्मनी की
जो उम्मीद नहीं कर सकते। आप हार्मनी चाहते हैं, सोसाइटी में पीस चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें बैलेंस में हों और उसके ज़रिए हम अच्छे परिणाम देख सकें। और यहाँ पर सही बात है, यहाँ पर जो गीता जी ने कही है कि एक तरह की रिलेशनशिप है, जो हम एनवायरनमेंट के साथ भी रखते हैं, एक बॉडी की उसकी जो सोल के साथ में भी होती है, उसके माइंड के साथ में भी होती है। तो रिलेशनशिप अकेले की नहीं होती है, किसी भी रिश्ते में किसी भी चीज़ से हो सकता है, उसमें 2 चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं और दोनों चीज़ें संतुलन में नहीं होंगी, सही स्थिति में नहीं होंगी, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं हो सकती। इसलिए माइंड, बॉडी और सोल जो तीनों को एक साथ लेकर उस पे काम किया जाना बेहद ज़रूरी है, तभी जाके हम लोग अपने आप को बेहतर पा सकते हैं। वरना तो हम एक पे काम करेंगे, दूसरा छूट जाएगा, तो तीनों पे काम करना बेहद आवश्यक है। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि आप पे जो समस्याएँ हैं, उनके जो सिम्पटम्स के साथ-साथ में उनका जो रूट कॉज़ है, उसके ऊपर भी जानने की कोशिश करते हैं। जबकि आजकल हम लोग देखते हैं, मेडिकल की बात करें और चीज़ें बात करें, आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी और के पास जाइए, वो आपसे पूछता है, आपको क्या हो रखा है? आपको बुखार हो रखा है, आपके सिर में दर्द है या जो भी है, उन सिम्पटम्स के बिहाफ़ के ऊपर दवा दे देता है, ये आपको प्रिस्क्राइब कर देता है, आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी जो बात कर रही हैं, वो कोशिश करती हैं कि रूट कॉज़ को फाइंड करने की। तो ये रूट कॉज़ को जो फाइंड करने की ज़रूरत कहाँ है? और भी तो लोग हैं, वो सिर्फ़ सिम्पटम्स के बिहाफ़ के भी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप रूट कॉज़ पर काम करने की क्यों कोशिश करती हैं? Okay, let me give you an example. Just say that there is this person A who has acidity. हुँ, He goes to the doctor and the doctor gives him a pill which he takes, and the acidity goes away, but then it comes back after some time. So he goes to the same doctor who gives him another pill. He pops the pill and it's better. But this keeps happening constantly, and the problem has not gone. And maybe he takes the help of other doctors as well, but the problem still remains. Now, this is because the symptom has been addressed here and not the root cause. Now, this is a classic example of a leaky faucet. So just imagine that you have a leaky faucet at home and there is a puddle on the floor. Now, you don't focus on the leaky faucet, but you clean the puddle on the floor. Okay, the puddle is gone, but then it comes back after some time. You clean it, it comes back, and it goes on. So instead of focusing on the puddle, if you were to repair that leaky faucet, then the puddle will not come back again. Likewise with the symptom, it is always, you attack the root cause, then the symptom is gone totally. So, how does a symptom occur? A symptom occurs only because of a certain happening in your life. And that happening is always something which is a trauma. And when I say trauma, like we always have the tendency to bring to mind something really huge. Yes, those are all very big traumas like death, volcanoes, hijack, murders. All those are very, very big traumas. But in addition to this, we have lived this many years and we have faced so many incidents which have been traumatic at a smaller level. Like, for example, you are in school, the teacher shouting at you, the हुँ, teacher punishing you, or your mother hitting you. All these are traumas. Likewise, we have so many other traumas which we have accumulated. So just imagine that you have gone through a trauma at office where your boss is shouting at you. So what happens immediately? It's very, very unexpected. You do not expect your boss to shout at you. It has always been a lovely relationship, and suddenly he shouts at you. So you go into stress. Now, when it is more intense, like, just say an accident, then what happens? Your body either goes into a fight, flight, or freeze response. Either you try to fight the situation, or you try to run away from the situation, or you freeze in that moment where you cannot move. So it is very important for us to liberate the client or ourselves from these responses. And when you have through this trauma, what exactly happens? Think about it. Your boss has shouted at you, and immediately you go into stress, right? You're constantly thinking about it. There is obsessive thinking. And at that moment, if your blood pressure was to be recorded, it will show as a high. And if I were to touch your hands and extremities, your feet and your hands, it will be cold. You start perspiring. You won't eat well. You won't sleep well. But just think, are we
we have lived this many years and we have collected so many of these small traumas. Are we carrying all of this? On some level, we resolve it, right? Either we go and apologize to the boss, realizing that we are at fault, or you change something so that this doesn't happen. So immediately you have resolved the situation. And what does the body do? It goes into regeneration. Your body starts healing itself. So then you start feeling warm, your BP comes back to normal, you eat well, you eat, sleep well. And this is where a majority of your symptoms come: your cold, your cough, your diarrhea, most of the pains, the inflammation, all of that happens here. And we think our body is diseased, but your body is actually healing. Just think about it. A lady, for example, I'm just citing an example, like just say that her husband has been ill and he is in hospital, and she does everything, cooks for the children, packs the children's lunch, drops them off at school, gets the husband's food, drives to the hospital, is with the husband. She does so much. It's so much of a stress. First and foremost, learning that he has to be hospitalized, learning that he has this illness is a huge stress. She does everything, and one fine day the doctor says he's recovered completely, he can go back home and resume normal life. It is a wow time for her. Her body is in regeneration. She comes back, and then they have a good get together with friends and family. And then suddenly she gets a low back pain. This has happened with many people. She gets a low back pain, and she thinks, like, I've done so much, nothing happened, and now when everything is fine, my back is paining. And she pops a pill. I'm not saying popping a pill is bad, it's good, it helps you. But if you were to do it with that knowledge, this pain came because of the stress of my husband's illness, then the entire process will be reversed and body comes back to harmony. So there's always a root cause to everything you're going through. And this is not only with the symptoms, it is also with your relationship. If you're not abundant, if there is not enough money, each of these have a root cause. If you're angry, you're not angry without a reason, right? So there's always a root cause to every aspect of your life. बड़ी बात है। मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन के मुझे जॉन एलिस साहब का वो शेर याद आ गया है कि दवा से फायदा मकसूद था ही कब कि फ़कत दवा के शौक में थे सेहत तबाह की मैंने। ये हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। कई बार जैसे भी आपकी बातें मैं सुन रहा था कि आपने बताया कि स्ट्रेस का संबंध भी सीधा-सीधा बैक पेन से हो सकता है, लोअर बैक पेन से हो सकता है, ज़िम्मेदारियों से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है और हम सोचते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है, हमें दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रही है और भी जो चीज़ें हो रही हैं और उनका कहीं न कहीं एक जुड़ाव दिमाग से हो रहा होता है, उन हालात से, उस नेगेटिव एनर्जी से हो रहा होता है जिसको हम लोग झेल रहे होते हैं। और जब तक आप उस जो नेगेटिव एनर्जी का जो प्रवाह कहें, उसका जो फ्लो है वो बंद नहीं करेंगे, उस सोच को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ में उतना आराम नहीं पा सकते। और बड़ी अच्छी सी बात कही कि अगर हम पेन किलर की बात करें और चीज़ों की बात करें तो वो आपको एक बार के लिए आराम दिलवा सकती हैं, लेकिन अगर वो रूट कॉज़ खत्म नहीं हुआ है, तो फिर वो दोबारा वही नज़र आएगी, फिर दोबारा वही नज़र आएगी। तो आप दवाओं के आदी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दवाओं के आदी ना हो और वो एक समस्या एक समय के बाद में खत्म हो जाए, तो ज़रूरी ये है कि वो समस्या आखिर है क्यों? और उसके लिए ज़रूरी होता है गीता जयकुमार जी जैसी जो एक्सपर्ट हैं, वेलनेस एक्सपर्ट हैं, उनसे मिलना और ये जानना कि इसकी शुरुआत शरीर से हो रही है या फिर हमारे मन से हो रही है, हमारी आत्मा से हो रही है, हम कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, आखिर इसका जो सीड है वो है कहाँ, कहाँ से ये अंकुरित होकर हमें इतना परेशान कर रही है। क्योंकि बाकी ऊपरी तौर पे अगर चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि खरोंच है जो ऊपर चोट लगी है और आपको नज़र आ जाएगी। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मन से, हमारी आत्मा से और हमारे विचारों से जुड़ी होती हैं। और किसी ने कहा भी है कि जितने शस्त्र घातक होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा घातक होते हैं विचार। क्योंकि विचार व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट कर सकते हैं, उसको अच्छा बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो ये जो अच्छे-बुरे के बीच की जो रास्ता है, उसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ के रूट कॉज़ में जाएँ, तभी आप उसको समाधान कर पाएँगे, वरना ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ खत्म नहीं होगी, वो बीज तो बार-बार में होता रहेगा बिल्कुल उस पेड़ की तरह जिसके आप ऊपर-ऊपर से कटाई-छँटाई करते रहेंगे, तो फिर बारिश होगी, फिर समस्याएँ होंगी, फिर से वो दोबारा अंकुरित होके वैसे पल्लवित आपको नज़र आता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर। अच्छा एक मैं यहाँ पर जो जानना चाहूँगा आपको मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे के अंदर,
तो मुझे बहुत सारी मॉडलिटीज नजर आई, बहुत सारा काम आपका नजर आया। मुझे लगा कि अगर मैं आज सिर्फ आपके काम पर भी अगर चर्चा करूं तो भाई ये एक 40 मिनट का शो है, कम पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना सारा काम कर रखा है। लेकिन फिर भी आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगा, आप अपनी लाइफ का जो मेजर जो ब्रेक थ्रू है आपके जो काम को लेकर, वो किस चीज को मानती, क्या रहे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि आप इतने सारी जो विद्वता कहें, इतनी सारी मॉडलिटीज कहें, इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस कहें, या जो आप जो अपने आप को कर पाई, वो कैसे, क्या रहा, उसके ऊपर ही बताइए, क्या मेजर ब्रेक थ्रू रहा आपके काम को लेकर। At the very outset, I would like to say that I don't take responsibility and say that I healed my client. It is the client's work right through. We are only guiding them and helping them to clear their issues. That said, some of the case studies where they have found success was my very first case, where this was a lady in a wheelchair, and her doctor had told her that she could never ever walk in her life, and they had gone to a number of other specialists, and this is what was told to them repeatedly. So when we worked, it did take about 7 to 8 sessions, but after 12 years this person is still walking with no coming back of the symptom, very happy, taking the metro, going up and down the stairs. Another case is that of a person who had a fracture and had to be wheeled into surgery in three hours. And this person was overseas, so it was a Zoom call. And it was like, I was in the middle of a workshop teaching, so I had to do it during my lunch break. And it was such an aha moment where after 15 minutes, this person was able to bowl, write, in fact, move his wrist up and down, twist and turn, so much so that the doctor asked him if it was the twin who had come for the MRI the previous day. And that was such a huge resolution for the person concerned. Next was the case of a childless couple. And in spite of IVF, the lady did not conceive, and they were told that they could never have children. And it just took us one session where, it was something in the past where the root cause was found and treated. And 40 days from then, I get a mail from this person saying that the lady was pregnant and today she's a mother of 2 children. And another was a case where this lady was on the brink of a divorce and she did not want this to happen. And I used one of the modalities where she was carrying the energy of somebody in her past generation. And once that energy was returned to that person, then, it was remarkable, where they were actually going to see a lawyer, but then they went to book their tickets to Greece. Next is the case of my mentor. I have the permission to say that it was my mentor, and it was a very, very, I don't know, I really valued this session because I was able to give back to this person what the person gave to me, in fact, and it was just 2 sessions, and the cancer, which was the tumor marker, was a 500. After the 2 sessions came back to 15. And during the COVID times, it was, there was so much gratitude that I could give back at that point of time. People were in such grief, people who had lost somebody just the previous day came for sessions to handle their grief. And just one session, that grief was gone. And the proof of the pudding was that the following few days, they started bringing in family members to get rid of their grief. So, yeah, these are a few of the stories. मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन के हमारे साथ में बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है। एक सवाल जो मुझे लगता है कि आम जीवन का सवाल हो गया, वो मैं लेना चाहूँगा। भूपेंद्र दयाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और एक इन्होंने सवाल पूछा है कि आई हैव अ सीवियर, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कहा है इन्होंने, और साथ में फिर कह रहे हैं कि आई हैव अ सीवियर प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप ऑन टाइम। मुझे लगता है कि ये तो आजकल एक आम लोगों की समस्या है कि समय के ऊपर सो नहीं पाते हैं, लेट सोना है, लेट उठना है, या फिर सो गए हैं तो फिर उस हिसाब से। तो कह रहे हैं कि आई हैव अ सीवियर प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप ऑन टाइम, माय स्लीप साइकिल कीप मूविंग 24 आवर्स, लाइक इफ आई स्लीप टुडे एट 10 PM then I will get up sleep 12 AM tomorrow,
सो गीता जी, आई वांट टू गेट अप 4 AM, हाउ कैन आई? अगर ये थोड़ा लेट सोते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है नींद नहीं खुलती है, बड़े परेशान से पैरंट करते हैं, तो पूरा होकर और ये चाहते हैं कि मैं सोऊँ तो लेट लेकिन उठूँ टाइम के ऊपर, तो उसको लेके भी आपके पास में कोई तरीका हो तो मार्गदर्शन करें प्लीज़। Sure. Thank you, Mr. Bhupendra Dayal, for your question. And this I don't see as insomnia. It's not that you're stressed and not sleeping through the night, or you wake up at a particular time. But what I feel is that maybe you are on gadgets, or just see your lifestyle and see how that could be adjusted. If you're on gadgets, or if you are stressed working too late hours, or if you are exercising very late in the evenings also, then sleep could get impacted. So just see your lifestyle and see how you could balance, and even what you're eating could play a role, and how late into the night are you eating. So just focus on that, but this is not a case of insomnia since you're able to sleep. बड़ी बात कही कि हमें जो भूपेंद्र जी, जैसे कि अभी गीता जयकुमार जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया है कि आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर आपकी जो एनर्जी है वो एग्ज़ॉस्ट हो कहाँ पर रही। जब आप उसका जो फ्लो है वो देख लेंगे तो उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करें और आप अपने आप को बेहतर पाएँगे। साथ ही साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल है उसको भी देखने की ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है हमारे जीवन की, जो हमारा एक शरीर का जो हिस्सा होती है, उसको भी समझने की कोशिश करें, तो उससे आप देखेंगे कि आप सही काम कर पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद गीता जयकुमार जी। अच्छा, एक सवाल हमारे दर्शकों को और भी आ रहे हैं। अभी कीर्ति जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कह रही हैं और ये आपके बड़ी इम्प्रेस लग रही हैं। मुझे कह रही हैं कि हाउ सिंपली गीता जी यू आर एक्सप्लेन एवरीथिंग, यू आर द अमेजिंग। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। जब अमेजिंग हैं गीता जयकुमार जी, तभी तो हमने इनको आमंत्रित किया और इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं। दर्शकों, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें निरंतर पूछते रहें, मैं बीच-बीच में आपके सवाल भी लेता रहूँगा और कुछ मैं अभी अपनी जो सवाल है उसकी तरफ मैं अगला बढ़ना चाहूँगा। गीता जी, आजकल हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, उनको साइंस के नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा उससे इतर चलने की कोशिश जानना चाहूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक डर कहूँ, मिसकंसेप्शन है, जो फ़ियर और मिसकंसेप्शन है, वो उनके इर्द-गिर्द रहता है ना? तो उस चीज़ को निपटने के लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि वो अच्छे ढंग से जीवन जी सके? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसी बातें करते हैं तो कई बार ये लगता है कि नहीं, ये बड़ी सुपरनैचुरल सी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, विज्ञान की दुनिया में ऐसा नहीं होती। ये समस्या है तो उसका यही टैबलेट लेनी चाहिए, उससे ही आराम हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? See, the first misconception that people have is that what we are doing, all these techniques are not scientific. But actually, these are grounded in psychology and biology, and they have a deep knowledge of both fields. And they have been scientifically proven, and there are several peer reviewed studies if you were to look into the net, and you will find them. Also, people are very scared to visit us because they have been taught to focus only on the present. If you were to look back, you would have heard either your teacher or your parents saying not to focus on the past because it's over, not to focus on the future because you don't know what it entails, and to be in the now. But it is actually the past which holds the key to your present and your future. So it is very, very mandatory for you to look into the past and clear those events so that you have a happy life now. And then some of the other questions people ask is the number of sessions they need for the problem to go away. Now, this is not a one size fits all, where I said that one particular person, the problem was resolved in 15 minutes, doesn't mean that this is going to happen to everybody, because we are dealing with energy. It's not that I have this pain and the problem goes off in 2-3 hours, but this is energy, and we don't have an idea of how the energy system in each individual works. So there is no guarantee, where some may need one session, some may need more. So we cannot give this. 4 is confidentiality. People have the fear that being a therapist, they have to open up to us, and their story may not remain their story. But there is a confidentiality certificate which I sign and give to each of my clients. And rest assured that even the case studies we give is only when we have the consent of the client. Otherwise, nothing comes out.
And another is that people fear interventions. Like they think that there could be needles, there could be pills, or it could be hypnosis. But it's just a talk like this, where, to give you an example, there was a lady who came to me with a frozen shoulder and was in pain. And all I was doing was just talking like how I'm talking to Sunil ji and all of you. And before long, she could move her shoulder and she was saying, man, how did that happen? But it's just going to be this. So these are the few misconceptions that people come up with, and I will not call them misconceptions because this is in the nascent stage. Therapy is very, very new to all of us. So it is our job to educate the people and make them understand what it entails. बहुत बड़ी बात की मुझे लगता है कि दर्शकों एक जो डर हमारे मन में रहता है कि हम अपनी बातें सामने वाले को कैसे बताएं, कहीं वो उसका कोई गलत फायदा तो नहीं उठा लेगा, हमारे बारे में कोई गलत छवि तो नहीं बना लेगा। उसके बारे में गीता जी ने कहा कि एक तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनलिज्म है, तो इसके अंदर जब आप किसी से मिलने जाते हैं, ऐसे एक्सपर्ट से किसी से मिलने जाते हैं, तो उनके लिए आप एक व्यक्ति होते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया है। और तो वो जाहिर सी बात है उसका सम्मान करने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो गीता जयकुमार जी ने कही है वो ये है कि आप जो भी बताते हैं या वो जो भी जानने की कोशिश करते हैं वो आपकी सहमति से होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उनके सामने जाकर बैठे और अभी वो कुछ पेंडुलम सा हिलाएंगे, कुछ और करेंगे और फिर आप सब के सब उनका अपना मुंह खोलना शुरू कर देंगे और बस आप चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। आप वही बातें उनको सामने वाले को बता पाते जो कि आप जानना वो जो आप बताना चाहते हैं। और एक जो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि अक्सर हम ये कहते हैं कि उसको एक सेशन में आराम आ गया, उसके साथ में इतने फायदा हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, उसको इतने लगे, मेरे एक में कैसे हो गया। तो ये जो डिफरेंस है इसको मुझे लगता है गीता जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। हम अलग-अलग जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके जो रिएक्शन है वो अलग-अलग तरीके से होते हैं। हो सकता है कि आपको वही पेन किलर हो जो 20 एमजी की हो वो भी काम कर सकती है, लेकिन दूसरे को 200 की भी नहीं करे, उसको 500 की करेगी। तो ये आपकी बॉडी का जो स्टेबलाइज है वो देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से रिस्पोंड करती है, कि वो जैसे रिस्पॉन्स कर रही है उसी के लिहाज से देखना पड़ेगा। बिल्कुल उस तरह से कि छोटा सा बच्चा हो सकता है उसके लिए वो 1 केजी उठाना बड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप उसी 1 केजी को उठाकर दूर तक फेंक सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कहीं, आपकी बॉडी कहीं वो उसी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से आपकी समस्याओं को लेकर बातें, चाहे वो बीमारियां हो चाहे कुछ और चीजें हों, कि आप अंदर से कितने मजबूत है, कितने जो कमजोर हो रखे हैं, ये बातें निर्धारण करते हैं कि आपको जो राहत मिलने वाली है वो मात्र एक सत्र में मिल जाएगी, एक सेशन में हो जाएगी, उसके लिए 2, 4, 5 बार सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी या दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर और जो मॉडलिटीज हैं उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता कुमार जी। मुझे लगता है कि इस सब बातों को जानने के बाद में एक भय तो समाप्त हो ही जाता है दिमाग से कि हम जाएंगे सामने वाले को बातें बताएंगे तो वो हमारी पता नहीं किस तरह से नजरिया रखेगा, और दूसरी बात है कि वो हम जो नहीं बताना चाहते हैं तो क्या वो भी वो जान लेगा। दर्शकों ऐसा नहीं है, आप जाएं बताएं और आप समस्या का समाधान चाहते हैं वो डिस्कस करें, आपको उनके समाधान जरूर मिलने वाले हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पर जो जानना चाह रहा हूँ, जब माइंड बॉडी वेलनेस की जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक आदमी वो कैसे काम कर सकता है उसके ऊपर, क्या उससे पहले से मॉडलिटी को जानना जरूरी होता है कि पहले वहां से सीख कर आए फिर करे, या कैसे क्या रहता है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। It is not essential for anybody to know a modality. If you know a modality, it is beneficial to you because you can work on your own issues, and the issues which you find difficult, you can seek the help of a therapist. But it isn't essential or mandatory that you know a modality. The efficacy of a therapist surfaces or comes to light only when the therapist can conduct that session thoroughly and give the resolution which the client needs. So it's not essential for you to know any modality. We will handhold you and guide you through the process. जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और आया हमारे साथ, सक्षम दास साहब जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी एक अपना सवाल रखा है और मुझे लगता है कि ये इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं कि पहले कहीं ना कहीं एक अंदर से मजबूत बनाया जाता था और अब जो लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन सहने की स्थिति में नहीं होते और हम देखते हैं उससे सुसाइड कर लेते हैं और समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ऐसा ही जो सवाल हमारे सक्षम जी हमारे साथ में रख रहे हैं, सक्षम जी कह रहे हैं, आदित्य जी, माई डिप्रेशन केम फ्रॉम द रिजेक्शन एंजाइटी। जब कोई रिजेक्शन हो रहा है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। व्हेन एनीवन रिजेक्ट मी अ लाउड वंस और द बिकॉज द बिजनेस क्लाइंट आई फील डिप्रेस, सो व्हाट टू डू। रिजेक्शन ये सह नहीं पाते हैं, इन्हें जब कोई रिजेक्ट कर देता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बड़ा ही अपने आप को डाउन फील करते हैं। तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं?
With this, I would like to advise you to seek the help of a therapist when there is a depression and you know the root cause of it is a rejection. Because I mean, it's easier, since I don't know if you know any modality and you're working on self, or you don't know anything, then it's better for you to seek the help of a therapist. It's easier that way because this is too brief a question for me to answer it in totality, and whatever advice I give will not be complete at this point of time. जी, बिल्कुल सही बात। जब तक हम उनको गहराई से जान नहीं लेते हैं कि उसकी वजह है क्या है, और जैसे गीता जी ने तो शुरू में भी कहा है कि जब तक रूट कॉज़ को नहीं जान लेती हैं, तब तक उसका इलाज करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है कि किसी ने दर्द बता दिया तो सिर दर्द की दवा दे दी। ये जानना चाहते हैं कि आखिर समस्या क्या है। तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि गीता जयकुमार जी या फिर जो भी आपको एक्सपर्ट इस तरह से नज़र आते हैं, उनसे आप मिलें और चर्चा करें कि मेरे साथ ये है, और फिर वो खुलकर बातें बताएँ, आखिर आप ऐसा महसूस क्यों करते हैं और कब से ये बातें हो रही हैं, तभी आप अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए पाएंगे। अच्छा, एक गीता जयकुमार जी यहाँ पर सिमी ग्रेवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो भी आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं। अदिति जी, कैन यू हेल्प इन द रिलेशनशिप इशू ऑल्सो? क्यों रिलेशनशिप इश्यूज भी हम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं। जैसे कोरोना के बाद में तो हमने देखा था बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। तो रिलेशनशिप जो इश्यूज होते हैं, क्या उनको हील करने के लिए भी आपकी जो मॉडलिटीज है ये काम आती हैं? Most certainly. As I told you, the relationship between the husband and wife, like normally you say that relationships are like a crack in a china, a china ware. You can mend the crack, but the crack will remain. But then you have lovely modalities like family constellation where you will never see the crack. It takes out the root cause completely, and then you come back into harmony. So there are modalities to deal with relationship issues for sure. And at this point, I would also like to emphasize relationship with others. It's actually a reflection of your relationship with yourself. So if you have that loving relationship with yourself, then you would have that loving relationship with others as well. अच्छा, ये अब जाते-जाते मुझे लग रहा है समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आपसे बातें करने का बहुत सारा मन कर रहा है, सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने देखा था कि आप अपनी जिन क्षेत्रों में हमने भी काम किया, उसमें तो किया ही किया, साथ ही साथ में आप फ़िटनेस को लेके, ईटिंग साइकोलॉजी को भी लेके भी अद्भुत काम करते हैं। तो फ़िटनेस की बात करें, ईटिंग हैबिट्स की बात करें, और जो हम जो पुरानी तरह से जो डाइट जो होता था, एक्सरसाइज़ जो सिस्टम होता था, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? वो भी बताएँ। As I told you in the beginning, fitness has been my passion, and I started my, I wouldn't say career because I was very young, but then my life journey started with fitness, yoga, and aerobics. And this has been an evolving industry like all other industries, and we've come a long way. Like if you see the diet and nutrition industry, earlier days it used to be 1,200 calorie set. Menu given to you. This is what you eat for breakfast, lunch, dinner, and today you have the vegan diet, the keto diet, the vegetarian diet, and so on. And I'm not saying that dieting, following any of these diets is bad, but it is only up to a certain point of time. An organism cannot survive if it's deprived of what macro and micronutrients it requires. So, just for a short period of time, just to give that system a nudge, it's okay to follow the diet. But you will have to find out what suits you because every individual is unique in their own way. What diet works for A will not work for B. So you will have to find what works for you because think about it practically. You cannot be on that diet, you cannot sustain on a diet throughout your life. Otherwise, it will have its rippling effect on other aspects of your life. It could just imagine constantly living only on vegetables. At some point of time, it will show in your behavior, your mind, body, spirit, social balance would get affected. Similarly, even with your exercise, just think, did our ancestors work out? I mean, for me, passion is workout, so I work out. But it's not everybody's passion, right?
So find out what really works for you. Earlier they used to say women should not lift weights. Today they say lift heavy. So these are all adding. I'm not saying it's good, I'm not saying it's bad, but these are all adding to our belief system. And if it is not true for yourself, it's not going to work. So find out what works for you and stick to that. सही बात कही कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, कि आपके लिए क्या काम करता है वो जानना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दौड़ने से ही सारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। सिर्फ दौड़ने से सारी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर किडनी फेलियर हो जाता है, उनको भी डॉक्टर सिर्फ दौड़ने की सलाह देता है। वो ये देखता है कि आपका शरीर डिमांड क्या कर रहा है, आपकी बॉडी किस तरह से। बिल्कुल उसी तरह से हमेशा दूध पीने से ही हेल्दी नहीं हुआ जा सकता। आपका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको देखना हो। क्योंकि वही दूध जब आप फूड पॉइजन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वक़्त तो ज़हर का सा काम करता है। और इवन छोटी-छोटी चीज़ों, पानी को भी हम लोग देख लें, ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें उसको कम पीने की सलाह दी जाती है या फिर ज़्यादा पीने की सलाह भी दी जा सकती है। तो ये उस डिज़ीज़ के ऊपर निर्भर करता है, आपकी जो बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज़ हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, आपके जो बॉडी के मैकेनिज़्म है उसके ऊपर कर रहा है कि आपकी जो शरीर है और आपकी जो सोच है और लाइफ़स्टाइल भी मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण अंग है कि उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को लें और किस चीज़ को नहीं लें। तो सिर्फ बादाम खाने से लोग मोटे होते हैं, तो लोग वही खाते हैं और सारे के सारे मोटे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैसा होता नहीं है। पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी बॉडी है वो आखिर रिस्पॉन्ड किस चीज़ को लेकर कर रही है। क्योंकि जैसे पाँचों उँगली बराबर नहीं है, तो वैसे बॉडी का जो मैकेनिज़्म वो भी अलग-अलग होता है। तो उस मैकेनिज़्म को समझें और फिर उसी के बाद में अपना एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएँ, किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ में मिलकर। गीता जी, समय हो चुका है, बस मैं जाते-जाते एक अंतिम सवाल यही करना चाहूँगा कि आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। दर्शकों माफ़ी चाहूँगा, सब सवाल तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक बिल्कुल एंड नोट के ऊपर आके इनसे जानना चाहूँगा कि जो गीता जयकुमार जी, इनकी सजेशंस क्या हैं, क्या एडवाइस हैं हम सब के लिए? जी, गीता जी। So you are a work in progress. Now, just because you have worked on one issue very successfully with a therapist does not mean that it's the be all end all. As I said, we have lived so many years and we have so much of accumulated stuff in us. So learn some modality and work constantly on yourself. And if there is any other issue where you cannot get to the root cause, seek the help of a therapist. You are your only solution. You have all the resources, but constantly working on yourself is very important. बहुत-बहुत धन्यवाद गीता जी, कि हमें पहले रूट कॉज़ भी जानना होगा, समझना होगा, अपने आप को समझना होगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए आपको खुद को भी वक़्त देना होगा। हम दुनिया में सबको वक़्त देते हैं, खुद के सिवाय, तो खुद को भी थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। और जिस बीच में एक ज़िक्र जब आया था, तब इन्होंने कहा भी था कि हम अपने आप को अलग-अलग चीज़ों के आदी बना लिए हैं। आज हम चाहे तकनीक की बात करें और जो चीज़ों की बात करें, उन्होंने भी कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो हमें अपने आप को समझना होगा। अंत में सिर्फ इतना सा कहना, वो सैयदा हज़रत साहिबा का वो शेर याद आता है कि सेहत की सुंदरता पाएँ, सबको रंग और रूप मिले, ताज़ा हवा भरपूर ग़िज़ा हो, इनको सुनहरी धूप मिले। तो सब खुश रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। इसी के साथ में आज के शो को समापन करने की आज्ञा चाहूँगा। गीता जयकुमार जी, आप हमारे साथ इस मंच के ऊपर आए, हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया कि किस तरह से हम लोग इन समस्याओं से जो समाधान पा सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे अपने आप को समृद्धि की तरफ लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करूँगा फिर से मंच के ऊपर आपकी अतिथि का सौभाग्य हमें फिर से मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, अभिनंदन। दर्शकों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। Thank you so much.